बातचीत का रास्ता है वो निकाला जाना चाहिए। कनाडा और भारत के बीच में जिस तरीके की तल्खी बढ़ रही है उसको लेकर ये बयान आया। इस बीच एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। A lot of questions on a particular topic. Sir Siddhant from Beyond, continuing with the question on Canada. The Canadian Prime Minister used words like potential link, and we saw the Foreign Minister also using words like maybe, if proven. We also saw comments of the US Ambassador yesterday saying that the investigation can be prejudiced. How do you, or what do you make out of these comments which are coming out? Okay, thank you. Pranay, I'll come to you. So, प्रणय उपाध्याय न्यूज से कनाडा के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जिस समय की ऐसी स्थिति है तो क्या वो भी रिव्यू में, और दूसरी चीज एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि बीएलएस जो कि वीजा प्रोसेसिंग एजेंसी है उसने देखिए विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हो रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि कनाडा और भारत के बीच में इस वक्त जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान आना, कनाडा की संसद में खड़े होकर भारत पर एलिगेशन लगाना और ये कहना कि जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों की हत्या हो रही है उसमें भारत का हाथ हो सकता है, इसके बाद भारत का कड़ा रुख अख्तियार करना और ये संदेश देना कि भारत के खिलाफ अगर आप कोई एलिगेशन लगाएंगे तो आपको सबूत भी पेश करने होंगे। एक के बाद एक जो कदम इसके बाद भारत की तरफ से उठाए गए हैं वो इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि कनाडा के पीएम ने जिस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश की, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, वो प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा। भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, फिर चाहे डिप्लोमेसी के जरिए जवाब देना हो, सख्त कदम उठाकर जवाब देना हो या अपनी भाषा में अपनी ताकत के जरिए जवाब देना हो, भारत हर एक सूरत हाल में कनाडा को जवाब देगा। हालांकि फिलहाल कनाडा जाने वाले जो लोग हैं या जो कनाडा के लोग हैं उनके लिए वीजा फिलहाल स्थगित रहेगा। अगली सूची आने तक ये जो सेवाएं हैं ये निलंबित रहेंगी। ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है कि जो वीजा भारत सरकार देती है कनाडा के लोगों को वो वीजा फिलहाल स्थगित रहेगा, यानी वो वीजा अभी नहीं मिल पाएगा। अगला आदेश आने तक, अगली सूची आने तक, अगली सूचना आने तक ये जो स्थगन है वो जारी रहेगा, यानी जो वीजा सेवा है वो अभी नहीं मिल पाएगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खालिस्तानी समर्थक अगर कनाडा में रह रहे हैं, अगर कनाडा में रहकर खालिस्तानी समर्थक भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कनाडा की सरजमीन से अगर भारत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और उसका समर्थन अगर वहां के पीएम करते हैं और उल्टा भारत पर इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद भारत अगर कदम उठा रहा है तो ये कदम उठाने कितने जरूरी हैं भारत के लिहाज से। हालांकि ग्लोबली भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। भारत और कनाडा अच्छा संबंध भारत और कनाडा के बीच में हमेशा से रहा है, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों की वजह से, खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से भारत नाराजगी जाहिर करता रहा है। जस्टिन ट्रूडो जो G20 समिट में शामिल होने के लिए, G20 समिट में शिरकत करने के लिए भारत आए, पीएम से बातचीत के लिए समय मांगते रहे और जब जस्टिन ट्रूडो और पीएम के बीच में बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की और ये बताया कि खालिस्तानी मूवमेंट अगर आपकी सरजमी से होगा, अगर आपकी धरती से होगा तो ये भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। जिस पर जस्टिन ट्रूडो का वो बयान आपको जरूर याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कुछ लोगों की सोच हो सकती है लेकिन ये कनाडा की सोच नहीं हो सकती है, यानी डिनाइल मोड में जस्टिन ट्रूडो नजर आ रहे थे। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो जब अपने देश पहुंचे, कुछ ही दिन बाद जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खड़े होकर एक बड़ा बयान दिया। इस बड़े बयान का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त सुनाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर भारत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, भारत की इमेज पर एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई और जस्टिन ट्रूडो ने ये कह दिया कि जो निज्जर की हत्या कनाडा में हुई है उसमें भारत का हाथ हो सकता है, भारत की एजेंसियों का हाथ हो सकता है। हालांकि तुरंत सबूत भारत की तरफ से मांगे गए हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। जस्टिन ट्रूडो से न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो से भारत सबूत मांग रहा है बल्कि वहां जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, अपने ही देश में जो जस्टिन ट्रूडो का विपक्ष है वो भी सबूतों की बात कर रहा है। यानी फिलहाल जस्टिन ट्रूडो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्टैंड उन्होंने लिया जल्दबाजी में, जिस दबाव में जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया वो दबाव उनको भारी पड़ सकता है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उन्हें बताना होगा कि उन्होंने क्यों भारत का नाम लिया है। Rishabh, your query was on
diplomats, Canadian diplomats here. Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. There was a query, I think you mentioned, let me take it in a different order. Siddhant, you had a comment on words used by Canadian Prime Minister, Foreign Minister, and then the US Ambassador, right? Yes, I do think there is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the Government of Canada are primarily politically driven. Manish, your query was on briefing our partners, etc. Look, on this one, as I said, we have been, of course, engaged with our partners on various issues, particularly including this one. We have been discussing with them. We have conveyed our position, how we see these developments, and I think those are part of ongoing conversations, but I'm happy to share a little more if you wish to talk about it. I will. I'll come back to that. I just thought I'll mention Manish's I'll come back to Manish because let me just make a couple of other points. I think, Sudhi, you had a query about Canada sharing any information. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think we've been very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. So that is answer to both sides of it, I think you asked. There was a query on, I'll come back. There was a query regarding from, I think, मनीष झा, आपका प्रश्न था सिक्योरिटी पे. देखिए सिक्योरिटी के मामले पे आपने पूछा था हमारे हाँ, देखिए हमने सीधे एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए. एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदू अलग से नहीं. एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए, हम इस तरह से नहीं देखते. इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी सबके लिए एडवाइजरी है. एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका. Sahil, your query was on whether we are sending security. No, look, we have always believed that it is the host government's responsibility to provide security. If there is some places we have our own security posture also, but look, I don't want to discuss security measures in public. That's not an appropriate situation. If I could come back to what Manish, you asked about. As I said, we have ongoing conversations with friends and partners. We have made our position quite clear to them on the lines that I've outlined just now. That's why I thought I'll outline our position first, that there has been no specific information, and we're willing to look at that if provided. On the issue of a threat, Vinita, you mentioned for various things. Look, I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat. But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. Yeah, no, as I said, one question at a time. On the issue of measures for our security, as I think the same question was asked, I don't want to discuss publicly, but of course we take
It is under the Vienna Convention. We expect host governments to provide security and for our premises, for our diplomatic personnel. What exact specific measures, I don't want to discuss publicly. प्रणय, आपका प्रश्न था वीज़ा पे. मैं जैसे भी बताया कि हमने वीज़ा इश्यूज़ पे, लेट मी एक्चुअली नहीं बताया था मैंने, आई थॉट हमने डिस्कस किया था. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं. इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है. इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं. हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी. पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है. I know there'll be questions on this in English, so let me say that in English. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. That's what I wanted to respond to it on Pranay's question on visas. Megha, I think you asked on Pakistan comments. I don't even know how to quite respond to that. Pakistan, if there is the last country, I think, talking about credibility, and I don't think anybody really takes their comments seriously at all. I think that covers it. Sahil, I had talked about security. Rajesh, yeah, look, if there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. I think that covers it. Next, can I take the next rounds of it? I saw your hand a long time. Yes, I'll come to you. Yeah, please. We're staying on Canada, right? Yeah, go ahead. Let's hear. Yeah? This is Karishma Mehrotra from the Washington Post. Okay. I wanted you to clarify the comment where you said that there should be parity in strength between the different diplomatic missions. Are you saying that the current reduction in the Canadian mission today was a result of an Indian request to downsize its presence in New Delhi, or was it an active measure taken by Canada to do so? Can you clarify that the parity statement you made? Saddam. Hi sir, I'm Saddam from CNN News 18. Sir, a former diplomat has made a comment on a national TV a week back saying that there was always a trouble for Indian Army officers to get visa, those who have served in specific locations in India like Jammu Kashmir, northeastern state, to get Canadian visa. Was Ministry aware about it, and have we ever raised this issue to the Canadians? And also, sir, my follow-up question, E.M. Jaishankar... I haven't even answered. How can you have a follow-up question? Sir, E.M. Jaishankar is in New York, sir. We've been told... No, sir. Honorable Minister is in Parliament. Oh, yes, sir. Follow-up question called up. Yes, I'll come to everybody. I assure you, there's time. Yes, microphone, please. This is Yeshi Seri from the New Indian Express. When PM Trudeau was in Delhi for the G20, did he raise this issue of Nijar whilst he was here with the Prime Minister? Did he make these allegations that he's raising in Parliament, or did this come as a surprise to all of us? During Who's the us? meet, meaning India, because he was here and he had a meeting with the PM Modi, and Khalistan issue was raised over there. Did this come up in the conversation at all? Okay. Yeah, behind. That's just many hands. I'll come to all of you guys. Wait. Sir, we also have a e-visa process. Parikshit from CNBC. Thank you, Parikshit. So we also have an e-visa process. Has that been suspended as well? And does this temporary suspension of visas apply to all categories? The Canadian Embassy, we are getting to know
from associations, travel associations, that they're still issuing visas. Who? The Canadian embassy. Do we have any clarity whether Canada has also taken reciprocal action and stopped? Okay. You had, yes, ma'am? I'll come to you. Yeah. Go I'm ahead. Amity from Business Line. The Canadian High Commission has said in a statement today that some of its diplomats have been facing threats. देखिए, ये जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे कई बड़ी बातें साफ हो गई हैं। पहली बात ये कि कनाडा पनाहगार नहीं बन सकता है खालिस्तानी समर्थकों का। ये भी कहा गया है कि देखिए, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा फंडिंग की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा पैसा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं ये फलते फूलते हैं। कनाडा आतंकियों का पनाहगार नहीं बन सकता है। एक और बड़ी बात जो एमईए की तरफ से कही गई, कनाडा में भारतीय हाई कमीशन और काउंसलेट पर खतरा है और खतरे को देखते हुए जो वीजा की सेवाएं हैं वो फिलहाल रोक दी गई हैं, यानी कनाडाई लोगों को फिलहाल भारत की तरफ से वीजा नहीं दिया जाएगा। कनाडा की इमेज आतंकियों के पनाह की तरह बन रही है कि आतंकियों को पालने वाली एक जमीन कनाडा बन चुका है, ऐसी इमेज बन रही है। कनाडा को इस इमेज से बाहर आना होगा। साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी किया गया कि जो एलिगेशन लगाए गए भारत पर कनाडा पीएम की तरफ से, उसका भी जवाब कनाडा को देना होगा। सबूत रखने होंगे कि आखिर आपने किस बिना पर भारत पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, इतना बड़ा जो एलिगेशन है वो लगाया गया है। तो कनाडा को लेकर लगातार अब जो भारत का रुख है वो स्पष्ट हो रहा है। भारत की तरफ से ये बता दिया गया है कि एक तो हम खालिस्तानी मूवमेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा पहली बार नहीं है। कनाडा की तरफ से लगातार खालिस्तानी समर्थकों की जो आवाजें हैं वो कनाडा में सुनाई देती हैं, बाकायदा मूवमेंट सुनाई देते हैं। भारतीय दूतावास पर जाकर भी चढ़ाई करने की कोशिश की जाती है। वहां पर जो हमारे राजदूत हैं उनको निशाना बनाकर उनके पोस्टर्स जो हैं वो लहराए जाते हैं। ऐसे में भारत की नाराजगी जस्टिन ट्रूडो को रास नहीं आ रही है और इसीलिए इतने बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो कनाडा को लेकर किस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बड़ी बातें कही जाएंगी, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी।